Hello and a very warm welcome on my mystic world of tarots. How are you all? Well, welcome to this wonderful world of energies, the healing energies, the sparkling guidance through the light of God, and just welcome. And this world is just so happy to welcome you. Yeah, and thank you so much for your messages. Yes, हम आपसे जुलाई and अगस्त में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, but no worries. Even September पे आधा month निकल गया है. But then whenever we meet, when two souls connect, it's a time for celebration, right? And the connection of souls, it's very different. Whether we have met in person or not, whether you know me or not, that doesn't matter. If I'm sending you the healing prayers, if you are sending me those vibrations, this is called the mingling of the souls. And this is very important for this, for this mankind to live, to survive in peace, serenity, and tranquility. So welcome. I've got two pack of cards, one that is going to make the predictions and the another pack of cards which is going to give us the divine light. So let's begin with the first sun sign. In fact, with the Aries, now I will be doing this, this is spread a little different. Okay, so I'll be spreading the cards like all the 12 signs. Let's see how the guidance comes, right? Okay, it's for the Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Right, that's a divine guidance. Moving on to the next shuffle. This is for the prediction. We've got the Aries, Taurians, Geminis, Cancerians, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Right, so that's a spread. This is for the September as well as October, right? So one more card shuffle I'll do. This is a special reading. General reading, of course. For your personal readings, you can mail me at krashikumar@gmail.com. On my tarot page also, you can just connect through Messenger. And of course, they are the paid readings. This is for the month of October. Aries, Taurans, Geminis, Cancerians, Leos, Virgos, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Okay, let's begin with the reading. The three cards, of course, and one crystal. Would you like to see the beautiful crystals? Yeah, they shine in divine beauty. That's the energy. Yep, the three cards for dear Aries. Beautiful, just beautiful. Your guidance is celebration. Just celebrate life. Whatever comes your way, just celebrate it. It's just like कि आप जा रहे हैं और वहाँ पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है. Just jump on it and you will realize that there are splashes. Something good is about to happen, dear Aries, right? And I just see your card. You're going to win the situation.
It could also be victory over some bad health, some issues, some mental conflicts, right? It's like you need to balance the two polarities, okay? That because that's a midway that you need to strike, and ये बहुत important है. Do strikes the Ten of Pentacles, so the money is coming, happiness is there, prosperity is there, something big is about to happen, and you are the winner because you are riding your chariot. ठीक है, तो इसको हम हिंदी में भी बोलेंगे. आप ये टाइम डियर एरियंस सेलिब्रेट कर रहे हैं. वेल एक कार्ड में ज़रूर आपका निकालना हम चाहेंगे कि आपका अगस्त कैसा रहा. तो अगस्त भी अगर आप देखो तो एक बहुत ही साथ के साथ आप अगर देखो तो आपको बहुत सपोर्ट मिला लोगों का. You know it better, you got that support, and that वो स्पिरिट कंटिन्यू कर रही है. इट्स लाइक योर गुडनेस इज कमिंग बैक टू यू. तो पहली चीज़, आप लाइफ को सेलिब्रेट करिए. एक विक्ट्री है आपके खुद के ऊपर, आपके तबीयत के ऊपर. लाइक अगर आप ख़राब फील कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, सो यू हैविंग बेस्ट ऑफ द टाइम्स. आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, एंड there is money contentment, there is a signing of money agreement, and something good is about to happen. कोई journey भी आप ले सकते हैं for the month of October or something like that. And yes, excess नहीं करना है किसी भी चीज़ का, जैसे ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा प्यार किसी को दिखाना, या फिर बहुत ज़्यादा extremity, बहुत like you need to be a little careful of your food, your diet, excesses, because that's a card of the chariot that has come. And there's a card, it always says that balance the polarities. Can you see the black and the white? And the best part is that जब हमारे दिमाग में ग्रे, एक्चुअली जितने भी कन्फ्यूजन्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो ग्रे शेड से होते हैं, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है. हम येस भी बोलते हैं, हम नो भी बोलते हैं, हम बिलीफ भी दिखाते हैं, डिसबिलीफ भी दिखाते हैं, है ना. हम नफरत में 4 बातें भी बोलते हैं, फिर हम अपने आप को संभालते हैं. That actually leads to a lot of clutter at the back of your mind, and it makes us ill actually. So वो गलत है. You just decide to balance the polarities and it would be great, and that is why it's called spade is spade. Black is white, black is black, white is white, and the mind is clear and bright. Moving on to the next sun sign, and that is dear Taurans, and let's check out what your card says. The 3 cards, yes, and your guidance says, wow, hug the tree, it will hug you back. इंसान को तो छोड़ दो, इंसान से तो उम्मीद ही मत रखो, हाँ. लेकिन पेड़ को जाके अगर एक गले से लगा लोगे, 3 दिन लगाओगे, तो चौथा दिन वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा. So it's like fall in love, get in touch with nature. It's time for you to get out, to get in touch with nature, है ना. तो और नेचर का मतलब है, जैसे अब कहाँ जाए बाहर अभी, because of this pandemic and all, we are observing certain precautions and everything. No worries, एक flower pot के भी सामने बैठ जाओ, उससे बातें करो, तो you will get those healing energies. Second thing is there, dear Taurians, that I see a lot of deceptions or delays, like emotional challenges you are facing. And if I see your month of August, yes, एक outsider kind of feeling है, जैसे कि या तो लोग समझ नहीं रहे हैं, आपके गुडनेस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं. नो वरीज, कभी भी इस पर आप ध्यान मत दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे हैं वो सिर्फ उनकी सोच है, उससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठकर ये सोचूं कि आप इस समय पेरिस में बैठे हुए हैं, तो वो मेरी सोच है. ये तो बहुत अच्छा है, मैं अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कुछ बैठ के आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, देन ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू यू. इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस टू योर वर्ल्ड, बिकॉज that has nothing to do with the reality. So stop thinking about the people. There are delays and deceptions, but no worries. अपने emotions को थोड़ा सा balance करके चलिए. पानी पीजिए, drink a lot of water, because that's what the cards are indicating. You are not an outsider basically. ठीक है, अगर आपने पिछला वाला मंथ देखा हो तो थोड़ा सा आपको अकेलापन फील हुआ एंड ऑल, बट नो वरीज. एंड द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, द मेजर आर्काना कार्ड, इट हैज कम, एंड दैट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लाइक जो अच्छा आपने किया है, एक्चुअली दिस पैंडेमिक ऑल्सो मीन्स द सेम. इट इज कॉलिंग a spade. All the truth will come. Man has actually always thought that उससे ज़्यादा स्मार्ट और ओवर स्मार्ट कोई नहीं है. उसको लगता है जैसे कि हम कुछ भी कर लेंगे, एंड I'll not be caught. राइट, ठीक है, नेचर इज़ वेरी मर्सीफुल, इसीलिए उसने इंसान को इतने चांसेस दिए. लेकिन नेचर इज़ द मोस्ट मर्सीलेस, इट डजंट लाइक जोक्स. ठीक है ना. हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य ही गॉड है. तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसी गॉड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं,
क्योंकि या तो सच है या झूठ है। तो जब आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या फिर हमने झूठ नहीं बोला लेकिन हमने किसी के झूठ को बहुत अच्छे से सुना, ठीक है, और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हमने उस झूठ पे बिलीव भी किया, और जब तीसरे को बताया तो 2-4 और झूठ लगा के बता दिया। तो हमने क्या किया, हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही तैयार किया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब भाई ठीक है, मुंह छुपाओ। अब इसके भी 2 चीज़ है ना, गलत किया है तो भी मुंह छुपाओ, और इसका दूसरा ये है कि जो अच्छा काम करो वो भी मुंह छुपा कर करो, किसी को बताकर अच्छा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में ही पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट फॉर टॉरेंस इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सोल. That's what my intuition says. Now, though these are the general readings, but I'm sure it's going to click because it's all from the soul. Moving on to the next sun sign, that is dear Geminis. And let's check out what your card says. Again, your card that suggests, that gives you the guidance. It's a guidance of integration. Integration means balancing the polarities. आप कहीं ज़्यादा तो आप अधिकता जिसको हम कहते हैं, profusion of something, like striking and not balancing, yourself, extremities पे चले जाना। क्या आप ऐसा कर रहे हो? तो ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये हर सन साइन में एक कार्ड आ रहा है, मैन बी बैलेंस्ड, मैन बी बैलेंस्ड, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ डियर जेमिनाइज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज नीडेड हियर बिकॉज इट्स अ 4 of swords over here, so this rest is very very important for you. And then 5 of swords is also come. तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप गलत रहे हो तो यू हैव टू lay down your swords. On the other hand, if you are right, because these are very general readings, then others will put down the sword for you. अगर आप सही हैं तो आप जीतेंगे, लेकिन अगर आप सही नहीं हैं, ठीक है, सही और गलत, लोग कहते हैं your thinking makes it so. I don't believe that. I believe if you are slapping a child, you are slapping a child. अगर आप एक छोटे से बच्चे को जस्ट वो बिकॉज बोल नहीं पाता आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, तो ये कैसे है कि मेरी थिंकिंग डिसाइड करेगी कि वो सही है कि गलत है? वो तो गलत है ही है, just because the child is not able to speak, ठीक है। just because somebody has not spoken, that doesn't mean that आपकी बात सच हो रही है। why? because ये पूरे cards यही बता रहे हैं, man beware and yes, so I believe your cards are good dear Geminis, but you need to take care of your health, if you're right you feel very confident about it, but if you believe that somewhere you have gone wrong, then definitely I think it's the right time to apologize. I see good cards. और अगर हम अगस्त के लिए आपका एक कार्ड देखें, आप देखें, आप बहुत पास्ट को भी क्लिंग कर रहे हैं, बहुत आप you are actually suffering, you are making yourself suffer through negativity, so you just need to leave that if you really, because this is really taking a toll on your mental health dear Geminis. Moving on to the next sun sign, Cancerians. Okay, wonderful Cancerians. I see the card of playfulness. Just be playful. Playful means you need to behave. आप अपनी रियलिटी से क्यों अलग हो रहे हैं? आप जो हैं आप वो रहिए. You just be playful. You just be nice. Why? आप अपने दिमाग को दूसरे की थॉट से क्यों अपने आप को बर्डन कर रहे हैं? If you don't believe in something, just don't believe. And if you believe, you believe. And when you believe wrong, don't blame somebody else. And if you believe the right, that is also your own credit. So just be playful, be yourself, what you are. And the second card is actually the card of temperance. It's like kiss and patch up. See, it's a kiss and patch up card, right? So you are testing the waters, you're very careful, right? And the card's also predicting, now be very careful. Be very careful of what you say. Be very careful of what you believe. Be very careful of where you go and with whom you sit, right? Be very careful. Why? Because then we are responsible of our own actions. I just cannot run away from the fact, if I'm listening to something, it's my choice. If I'm believing in something, it's my choice, right? So
That's a beautiful card, I believe, and I see though I see some money restrictions coming your way, but you are smart enough to deal with it. And secondly, I also see you might take some short journey. There's some kind of movement near water, or it's like you are strong at this point of time. Professionally, you're strong. You're able to handle your things well. Now, if I see your last month, dear Cancerians, some kind of sometimes it happens that a good karmic account जो हमने अच्छा किया है जीवन में, वो हमें एक बार बचाने की कोशिश करता है ना। कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आने की कोशिश करती है, इसलिए नहीं कि वो आपकी लाइफ में आना चाह रही है, क्योंकि वो एक डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी है, ठीक है। द चॉइस इज एब्सोल्युटली आवर्स। लाइक आई ऑलवेज बिलीव, आई कीप द डोर्स ऑफ माई हार्ट ओपन। मैं अपने दिल के दरवाजे खुले रखती हूँ। आप आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। आप जाना चाहते हैं, मैं आपको फूल दूंगी, बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू बोलूँगी। एंड आई वुड से बिकॉज coming and going is not in our hands. Destiny has its own plan. So अगर हम उस डेस्टिनी को हेल्प करते हैं, वी बिकम अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। अगर हम उस डेस्टिनी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, अगेन वी चैलेंज। सो आई बिलीव योर कार्ड्स आर जस्ट फैंटास्टिक। देयर इज अ काइंड ऑफ एन एलिवेटेड एनर्जी विच इज एंटरिंग योर लाइफ, विच इज बियॉन्ड इल्यूजन। दैट्स अ त्रिनेत्र ऑफ भगवान शिव। So it's like you have to see the world from your own angle. Right? Many a times it happens that we are dragged into some kind of thing. We are dragged into a obsessive pool. Maybe our soul is not believing into something, but in order to keep our things okay kinds, we just try to settle in. We just try to sink in. But that's not right. That's not right, because what is right and what is wrong. And if we are not able to see, इंसान को हर मौका इंसान भगवान देते हैं कि हम अपनी चीज़ों को खुद सही और गलत को देख सके, उसको ठीक कर सके। और अगर हम नहीं कर पाते हैं इंसान, तो फिर कुदरत हमें बहुत सारी चीज़ों को समझाती भी है और दिखाती भी है. That's a law of nature. Wonderful cards, dear Cancerians. Moving on to the next sun sign, that is dear Leos. And let's check out what your card says. I'll look at the 3 cards here. Leos, you've been asked not to compromise. कोई है इंसान जो आपको गलत चीज़ से compromise कराने की कोशिश करेगा, suffocate करने की कोशिश करेगा. ये बड़े negative words हैं जिन words पे हम लोग बोलते हैं कि compromise बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए. नहीं, there is nothing like compromise because it's a very negative word, because adjustment, if you love somebody you adjust, if you're a good human being you adjust. किसी को suffocate करवा लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है. You know, if you love someone, love is liberation, right? How can you suffocate someone? How can you cage a bird and say I love the bird? No. You may believe, but that's not the law. That's not the law, right? That's not the law. So don't go against the law, because the law says that even the souls cannot be caged. The law says that, right? So we need to be very careful. And then it's a time where I believe that मनी का आपको अगर दिक्कत हुआ भी कहीं लियोज, तो आपको वो हेल्प, मतलब कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी. कहीं हो सकता है आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े. और एक मैन का इन्फ्लुएंस लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर अ मैन, ऑफ कोर्स अनदर मैस्कुलिन एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. इफ़ यू आर अ फीमेल, आई बिलीव देन दिस मैस्कुलिन एनर्जी विल हेल्प यू ऑल द मोर. आपका अगस्त का मंथ अगर देखें तो आपके अंदर बहुत क्लैरिटी आई है, आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं, राइट? और कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव नेचर से भी हुआ है. ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि पैंडमिक कब जाएगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैंडमिक को हमने क्यों बुलाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने अंदर झांकना है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन एंड डियर वर्गोस. Oh dear Virgos, I think कुछ something very striking is about to happen. Now ma'am, good or bad? Well, I would always say good, because everything happens for good in life, because it's a thunderbolt card, right? So just be good and nice. आप अपनी prayers करिए, क्योंकि हमसे सिंस होते हैं, हम सिनर्स होते हैं, हमसे सिंस होते हैं. एक चीज़ है, सॉरी के बाद भी हम कितनी बार वही गलती करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है. और अगर हमने गलती कर ली है तो हम उसको प्रायश्चित कैसे करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच तो एक दिन सामने आना है. और कुछ झूठ हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि झूठ का मतलब ही है दैट आप ईश्वर से विद्रोह कर रहे हैं. आप झूठ नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ों के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? उसका आपको परमिशन नहीं है, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल. आई सी वंडरफुल कार्ड ऑफ लवर्स कमिंग हियर. तो ठीक है, एंड यहाँ पे लव का मतलब जस्ट डोंट, it's very vague, it's very wide. So all kind of love is entering your life. Love, compassion, happiness, friendship, everything is there. जब
ये भी ठीक है डियर वर्गोस कि बहुत सारी चीज़ों से आप आगे निकल चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक आप पहचान चुके हैं कौन कैसा है, लेकिन फिर भी आपका दिल अच्छा है तो आप कहते हैं चलो भैया ठीक है ना। और दुनिया तो बेफेज लोगों से भरी हुई है ना। वो झूठ भी बोल देंगे, पकड़े भी जाएंगे, सामने भी आ जाएंगे, फिर मीठा मीठा हो जाएंगे। सो नो वरीज, बेस्ट ये है कि आप उनको पहचान गए हैं। सो इट्स लवली। एंड अगर मैं देखूँ आपका लास्ट मंथ कैसा गया, तो लास्ट मंथ तो बहुत अच्छा गया है वर्गोस। यू हैव जस्ट एंजॉयड योर वर्क एंड थिंग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंसान। पूरी दुनिया में आप प्यार फैला रहे हैं, रंग बिरंगा प्यार फैला रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी का प्यार है, कंपैशन का प्यार है ना, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप पुरानी मेमोरीज में जा रहे हैं, आप उन पुरानी मेमोरीज से रिश्तों को याद कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि परसेप्शंस का बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कभी हमें परसेप्शंस का क्या लगता है, कभी कोई कहता है, कभी जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की अलग अलग थॉट होती है। कभी कभी किसी को लगता है, जैसे अगर आप पुरानी चीज़ की बात कर ले तो लोगों को लगता है, मतलब दे यूज़ अ फ्रेज दैट यू आर डिगिंग द ग्रेव्स। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, क्योंकि दूसरे के लिए, किसी और के लिए तो इट्स दिस कार ऑफ फ्रेंडलीनेस, इट्स अ कार ऑफ ऑफ मेमोरीज, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिविटी में डाल ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी में अपने आप को बिल्कुल नहीं डालना है डियर लीब्रन्स, नॉट एट ऑल, ठीक है। और आप जितना डर रहे हो उतना डरने की कोई बात नहीं है। मनी आने वाला है, पीस आने वाला है, कंटेंटमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। लास्ट मंथ तो आपका बहुत अच्छा सा गया है, दैट्स व्हाट द कार्ड्स प्रेडिक्ट, बिकॉज you grew, you realized certain things, and you've taken certain decisions which are absolutely right. Moving on to the next sun sign, and that is Scorps. Let's check out what the Scorp says. Scorpions, you need not to be sorrowful about anything. Come on, you just have to accept that world is unfair. Forget it, because all the energies are with you, all the good vibrations are with you. So don't think about it, right? Everything God will make, this nature will expose everyone and everything before you. See the cards. The night इतनी क्लियर होगी कि आपको एक एक तारा दिखेगा, और सन इतना ब्राइट होगा कि उस एनर्जी से आप वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करेंगे. So that's the power. That's a power of goodness, dear Scorpions. अगर हम आपका लास्ट मंथ देखें, see the card of let go. Actually, let go का मतलब ये होता है, लोग इसको समझते नहीं है. लोग कहते हैं oh let go. No, actually it means really. इसका मतलब ये होता है leave it to destiny. Destiny will take a call. Okay, ये बड़ा ही क्या बोलेंगे, स्कैरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक तरीके से ये है कि लेट द रिजल्ट्स बी डिसाइडेड बाय डेस्टिनी. तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ों को आप अपने ही लेवल पर क्लियर कर लें, उसे लेट गो नहीं करें, क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं तो वो एक साइकिल बन रहा होता है. दैट मीन्स यू आर लीविंग द थिंग्स फॉर डेस्टिनी, एंड डेस्टिनी इज़ वेरी क्रूअल, because destiny sees what we don't see. Souls see what we don't see, right? So this is let go. So let go. When people say let go, I always tell them, try to sort out the things. Don't let it go, because when you let it go, then you are leaving it in the hands of the most merciful and the merciless destiny, the nature, and then it happens cut. इंसान ने लेट गो ही तो किया, तभी तो पैंडेमिक आ गया. इंसान लेट गो नहीं करता तो बहुत संभल जाता. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो that's what Scorpions, and I think you believe in that, so it's good for you. Yeah. Okay, moving on to the next sign, that's the Saggitarians. Oh dear Sagittarians, I see cards for you. Slow down. You just need to slow down. Maybe perhaps you're thinking about something too much. Maybe it's your work pressure, maybe it's your business pressure, maybe it's your family pressure, whatever it is. But the turtle here tells you to slow down your pace. And it's not the pace of physical activity, it's a pace of your mental activity. You need to think, you need to stop, you need to take a break, you need to look within, and that is very, very important. Okay.
And because there are the problems which are coming your way, because they're the Five of Pentacles. There's delays around the money, maybe some professional problems. I won't say problems, there's nothing like problems, but of course these are the challenges. And I believe ऐसा कोई challenge नहीं है इंसान की जिंदगी में जिसको वो एक अच्छे दिल, अच्छे नियत, अपने repentance, अपने positive approach से वो उसको balance ना कर सके. Provided, यानी कि दवा और पैनेसिया हमारे हाथ में, हम उसे कैसे utilize करते हैं वो आपका choice है. And then why you are sad? Don't be sad, because all is not lost. All is not lost. All is not lost. Because if you look back, you may have something to salvage. You know, if you look back, as the cards is saying, कि इस कार्ड में 3 कप्स तो गिरे पड़े हैं, बट पीछे 2 कप्स और हैं. ठीक है, तो जो भी हम गुड करते हैं लाइफ में, इट कम्स बैक टू अस, बट वी नीड टू हैव द सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो डोंट बी सैड. और कभी ग्रीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि mourning, you know, it takes a toll on our health, and as the cards are saying, I think you need to take care of your health. That is very, very important. अगर हम आपका last month देखें, dear Sagittarians, so there was a kind of a change. Yes, I was right. आपने physically, health wise थोड़ा suffer किया है. That's what the cards are saying. So take very good care of your health. Stay happy, stay good, right? And strike your association with God, strike association with the spiritualism, strike your association with the righteousness, because that's only what is going to help you out. That's a panacea of all ills. I would like to take one card for you, dear Saggis. Oh yes, I was right, because the moment you do that, you're out of it and you bounce back with your real energy, the real self that you have. Now, moving on to the next sun sign, and that is dear Caprice. Hi, how are you? Oh, you mix, my wonderful friends, abundance. एक ये कार्ड आपको हमेशा सजेस्ट करता है कि लेजी नहीं होना, है ना. अभी तो स्काइज अपॉन स्काइज टू एक्सप्लोर, तो आलस नहीं करना है, लेजीनेस नहीं होना है. क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है हमारे जीवन में लेडी लक. सी, एक वुमेन एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है. एक वुमेन एनर्जी के लिए बोला जाता है, एक वुमेन एनर्जी, द फेमिनाइन एनर्जी, इट कैन डेविस्टेट एंड इट कैन मेक. That is the power of the feminine energy. So we need to be very, very careful. We need to strike a balance. So I would always say that, you know, try to get associated, you know, with elderly people, like your mother, maybe somebody, you know, who is elderly, because that's a Queen of Emotions card coming. Because क्या होता है जब हमें किसी young person से let's say negative energies, feminine energies मिल रही होती है, तो उसको balance करती है. Because mother की, अगर हम exceptions की बात नहीं करें, तो the genuine love of a mother, you know, the unconditional selfless love of a mother, still I'm saying, I'm not talking about the exceptions. So this is definitely going to help you out. And कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, I mean खट से आने वाली है, like कोई बिजनेस को लेके, चीज़ को लेके, जैसे आप हमेशा परेशान रहते हैं अपने बिजनेस वगैरह को लेके, तो इट्स ऑलवेज एंड ट्रस्ट द कार्ड. लास्ट मंथ का ये मैंने एक उठाया कि आपने, you know, you are spiritual, and that's the biggest strength. That's the biggest strength. Moving on to Aquarians. Let's check out Aquarians. What is happening? Have the courage. Have the courage. राइट, आपके पास करेज होना चाहिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है. कोई भी सिचुएशन है आप फेस कर सकते हैं, एंड you've got all the power to face the sun, which is very, very important. Then you have to take your blindfold off. बहुत सारी पट्टियाँ आपने अपनी आँखों पे बांध रखी है, ठीक है, तो वो अब आपको निकालनी है. आपने दिल को बड़ा मतलब इमोशनली बहुत ही ब्लॉक करके रखा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. Let life flow, let feelings flow, right? Do not have the clutter of nonsense at the back of your head. Don't take the nonsense. You're a little frustrated with your job also, because अब आपको लग रहा है अब मुझे क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब ये source of money, income कहाँ से आएगा. Don't worry, because अगर आप last month अपना देखें, and I think love बहुत, आपका life partner का भी मतलब बड़ा डेप्थ में है. जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी आपने ये चीज़ सुना है, 2 जिस्म 1 जान. लोग इसको बड़ा रोमांटिक समझते हैं, लेकिन I think this is a phrase which aptly applied to the bond that I shared with my papa. It was like that. हम लोग like we were two people, 2 individuals, but then there was a very strong bond, you know, there was a very strong connection. So whenever we get the card of lovers, so just don't think no, lovers means the love energy.
the energy of unconditional compassion, the energy of a friend, So all that is very important. I think your spouse, I'm sure your spouse is a great friend to you, and he or she, vice versa. I'm talking about the spouse, though. Of course, your wife or otherwise your husband, for whomsoever, because these are general readings, it's going to be a great source of a strength to you. And I feel you just have the courage and you will sail through everything. Moving on to the Pisceans. Let's check out what your card says, dear Pisceans. Pisceans, why you're comparing yourself too much? Stop doing these comparisons. Comparisons are never good. Why you're comparing? What for are you comparing? Comparison जैसा तो कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं. किस चीज़ से compare करना? हाँ? दो चीज़ अलग हैं. अपनी individuality है, अपनी चीज़ें हैं. You need not compare anything, right? So stop comparing, because everything, even a single strand of grass, a blade of grass has its individuality, and so has the oak tree. And they both stand in beauty, right? Walt Whitman, right? Then 9 of Wands, you're just on the top of the situation. If there is any kind of business deal you have to finalize or any decision you have to take, you're on the top of the situation, and you are right. Just go ahead. And the Page of Cups, a good news is coming your way. If I see your last month, I see आपने बहुत संभल के आप चले हैं, moment to moment you have taken, and it is very good. Continue with that, and that's wonderful. So thank you everyone for joining. This is the world of divine energies. Be very careful of what you speak about others. Be very careful of what you think about others. Be very careful how you say your things, or you put forward your things, because trust me, it affects no one. It affects no one. The person who is affected by all that you are doing is only you. It's only you. And this is the logic, this is the calculation that we don't understand. हमको ये लगता है हम किसी के बारे में wrong बोलेंगे तो दूसरा affect होगा, दूसरे का चीज़ हम खराब कर रहे हैं. नहीं. Actually in the long run हम अपनी ही चीज़ को खराब कर रहे हैं, right? क्योंकि हम negativity spread भी कर रहे हैं, and that is a sin. Why are you spreading the negativity? If you're a right person, why don't you straight away go clear the things, talk? Why don't you do that? So we need to be very careful with that. Be very careful, especially in these times of a pandemic. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little mouth, what you say. Be careful, little hands, what you do. This is very, very important. Wish love for each other, give healing prayers for each other, right? And don't spoil the purity of bonds. Don't spoil that, because that's the biggest sin we do, right? When we try to spoil the purity of something. It's just like, कि कोई बहुत अच्छे वाइब्रेशंस के साथ एक मंदिर में, अपने टेंपल में आप चर्च जाते हो, बहुत वाइब्रेशंस के साथ वो अंदर पॉजिटिविटी के साथ अंदर जा रहा है, और आप उसका एकदम मूड ख़राब कर दें, तो आपने क्या किया? आपको लगा आपने उस इंसान का मूड ख़राब किया? बिल्कुल नहीं. एक तरीके से यू रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड, एंड देन वी वांट टू बी, वी वांट टू स्टे हैप्पी, हेल्दी, गुड इन लाइफ, राइट? Two things can never be compared, materialism and spiritualism, because they are absolutely two different worlds. You can own a Mercedes, you can own 10 bungalows and mansions. It has nothing to do with the yogi on the streets, jiske liye a star is the guiding light. Don't compare. Just be happy, dive inside, find out where did you go wrong. Try to confess, not before others. Try to confess before your own self, seeing yourself in the mirror, because that is only the way, that is only the panacea that can save us. Thank you for joining. Thank you so much.